Hello, friends, and welcome to this lesson. Now, today we are going to learn something that is absolutely very essential for every person who wants to become a business leader or a team leader. So, we are going to talk about how to conduct meetings. दोस्तों, आज के इस लेसन में हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं. वो बात है मीटिंग को कैसे रन करना है, हाउ टू कंडक्ट अ मीटिंग. अगर आप बिजनेस लीडर हैं या बनना चाहते हैं तो मीटिंग कंडक्ट करना आना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, definition of a group meeting. Now, a group meeting is nothing but a gathering of two or more people where purposive discourse, which means where you are talking on something that is important, something that is purposeful, something that is aimed at getting something done. So it's not a meaningless discourse. Discourse is exchange. So it's not meaningless, full of meaning, full of purpose, aimed at something. Now, the group may be formal or informal, unplanned. See, people sitting in the coffee shop of their or the canteen of their organization can be discussing official business. That too is a meeting. People standing near the coffee counter and discussing, that too is a meeting. So you can have a free flowing discourse, or you can have a formal meeting where invitations are sent out, where an agenda is prepared and sent out, where people come and you sit down around a table, or there's a conference room where you sit and presentations are made and then minutes of meeting are made. That is a formal setup. But meeting can be formal or informal, but two or more people, whenever they get together for a purposive discourse, whenever they get together to talk something of importance, to solve a problem, to provide information, any of these activities, then that is a meeting. दोस्तों, मीटिंग दो या दो से ज़्यादा लोग जब कभी भी मिलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन कैंटीन में, कॉफ़ी मशीन के पास खड़े हुए बात कर रहे हों, ये सब मीटिंग्स होती हैं. कुछ मीटिंग्स फॉर्मल होती हैं, जैसे एजेंडा जाएगा, फिर मिनट्स बनेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी, वो फॉर्मल हैं. अदरवाइज इनफॉर्मल मीटिंग्स भी बहुत सारी होती हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस. What are the purposes of meetings? So, my dear friends, meetings have two core purposes. One is to present information, other is to solve problems. That's why we said purposive discourse. That means there is a purpose behind this discussion. It is not an aimless or meaningless discussion, or it is not time pass. So it is aimed at something. You are trying to get something done or accomplished. And there may be three types of meetings. Informational meetings, where information on something is explained and some things may be exchanged. Suggested solutions. So if there is something that needs a solution, then you call for a meeting where people would get together, put their heads together, do brainstorming, suggest solutions. And then there will be problem solving meetings. So these are the three kinds of meetings that you would generally have. दोस्तों, तीन तरह की मीटिंग होती हैं और दो कोर पर्पस होते हैं. एक तो कुछ भी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना मीटिंग में, दूसरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, समस्याओं का हल निकालना. इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स हो सकती हैं सोल्यूशन सजेस्ट करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए मीटिंग्स हो सकती हैं, या कोई समस्या है उसे सॉल्व करने के लिए मीटिंग हो सकती है. अब हम बात करें लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. इफ़ यू आर अ टीम लीडर, देन you would be chairing your meeting. If you are a higher up in an organization, then you would be chairing a meeting. So chairperson of a meeting has got major responsibilities, because the chairperson is the person who's going to
take everyone through the course of the meeting, who will decide the direction of the meeting, who will decide how people are going to contribute, who's going to make sure that everyone is able to contribute, who's going to make sure that the meeting actually meets its purpose. So if you are a leader and you are having a team meeting, then you are the chairperson of that meeting because you are the leader. So it doesn't need to be, that your designation is chairman, so you are the chairperson. That's not it. दोस्तों, चेयरपर्सन जो होता है या सभापति जो होता है सभा का, मीटिंग का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ही मीटिंग को अच्छी तरह से रन करता है, क्या मीटिंग का ध्येय है उसे पूरा करने में मदद करता है और सभी को कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करता है. तो चेयरपर्सन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर्स during the meeting? So if you are going to be the leader, if you are going to be the chairperson, then a meeting normally starts with an opening statement. So opening statement is where you make your introductory remarks and you also give the background for the meeting and what you are going to do in that meeting. So you will set the tone for the meeting. You will in one way restate why you are meeting. You will restate the major agenda for the meeting so that everyone is on the same page and you are able to get things done. The next thing that a leader has to ensure is stimulate discussion, because you might have a question that, okay friends, this is the problem, any solutions? So people may just sit there and stare at you. They may do nothing. So you have to stimulate them. You have to persuade them. You have to motivate them. You have to encourage them. And you have to make sure the discussion keeps moving. If you've asked everyone, friends, what are your suggestions? Nobody is saying anything. Then you can start asking individuals. Okay, Harish ji, would you like to elaborate? Yes. Rishabh, what's your suggestion? Yes. Pinky, have you got something on your mind? That is the way a chairperson will encourage people to speak. And remember, you are not there to fight, you are not there to oppose people. So if that starts happening in the meeting, you should maintain an atmosphere of goodwill and cooperation. You should try to bring everyone back to the same page. दोस्तों, चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ह्यूज होती हैं. चेयरपर्सन शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स में मीटिंग में क्या होना है उस चीज़ को एक बार फिर से सभी के सामने प्रस्तुत कर देता है, जिससे सभी लोग उसी दिशा में अपना दिमाग लगाएं. दूसरी चीज़ जो चेयरपर्सन करता है वो है सभी के पार्टिसिपेशन और सजेशन को लेने की कोशिश. आप कुछ पूछते हैं, लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आपको अलग अलग लोगों से पूछ के, अलग अलग सवाल पूछ के उनसे कंट्रीब्यूशन लेना शुरू करना होगा, जिससे मीटिंग आगे बढ़े. नाउ पार्टिसिपेंट्स. सो there may be several participants who are going to be problematic in a meeting. So as a chairperson, you need to understand how to tackle such participants. There'll be some troublemakers, there'll be some dissenters, there'll be some people who will always oppose whatever is said. So you have to know how to tackle. You also need to help the group evaluate options. Look at data dispassionately and come to a good conclusion. You should encourage the group to consider the advantages and disadvantages of things and try not to impose your opinion. दोस्तों, आप जब मीटिंग के सभापति होते हैं तो कई बार ऐसे भी कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जो वहाँ सिर्फ ऑपोजिशन करने आए होते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, असंतुष्ट नज़र आते हैं हमेशा. आपको ये आना चाहिए कि उनसे आप कैसे डील करेंगे. दूसरी चीज़, एज अ लीडर ये आपका कर्तव्य है कि
सभी लोग सभी बिंदुओं पे सोचें, सभी चीज़ों का आकलन करें और एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुँचें। और आपको ये भी करना चाहिए कि आम सहमति बनने पे आपका जोर होना चाहिए, इस बात पे नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो मान लिया जाए। Now, my dear friends, the next thing that you have to do as a leader is to state the major conclusion and plan of action. So, while the meeting is going on, somebody has to note down. Sometimes, if it's a short meeting, you have the meeting, then you note down what all has been done. So, you should summarize and you should make sure that everybody knows what his or her role is going to be in the action plan that you have created. You should also have a timeline for actions to be completed. And then you should thank everyone. And that's it. Complete the meeting. तो दोस्तों, जब आप मीटिंग में हों और मीटिंग ख़त्म करने के पहले आपका ये कर्तव्य है कि सारे जो भी निर्णय हुए, जो कंक्लूजन हुए, वो सभी को बता दें और सबको ये भी बता दें कि उनको क्या करना है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। और हर जिम्मेदारी और कार्य के साथ एक समय सीमा भी निश्चित कर दें कि इस समय सीमा तक ये कार्य होना है। ये करने के बाद आप सभी को धन्यवाद दे सकते हैं और आपका कार्य ख़त्म होता है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि एक्शन प्लान बने, क्योंकि मीटिंग सिर्फ होती रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मीटिंग का फ़ायदा तभी होगा जब हम एक्शन प्लान्स बना लेंगे और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे और फिर उनकी मदद करेंगे उसको करने में। Now friends, all the time you cannot be the chairperson. So if you are not the chairperson, then you are definitely a participant. So as a participant, there are two roles that I feel everyone should know how to perform. Deadlocks are common in meetings and people become, there's polarity. They go to different poles and they refuse to see eye to eye. So try to find a middle ground, try to find a compromise, try to break the deadlock. Always try to help others, invite others to contribute, invite others to say what they have in mind, and don't, embarrass others. Try to help everyone, especially those who hesitate to speak up in the forum. तो दोस्तों, दो और रोल आपके हो सकते हैं अगर आप चेयरपर्सन नहीं भी हैं, और हैं भी तो भी। एक तो लोग आपस में कई बार विरोध इतना हो जाता है कि एक आदमी एक तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है, तो क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? क्या हम एक समझौते की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं? क्या हम कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं? तो इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं या अपनी बात कहना ही नहीं चाहते, कहते हैं इससे क्या होगा, मैं नहीं बोलूँगा, उनको भी आप वहाँ लाएं, उनको भी आप थोड़ा सा एनकरेज करें, जिससे वो भी ऐसी मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। So my dear friends, what we have discussed is how you should run a meeting as a chairperson and how you can take part as a participant. Now meetings are an important part. During a meeting, focus on what is to be done during the meeting. Try not to digress. It's very easy to digress, especially when you're all well known to each other. You can start discussing something completely unrelated. So what you should do is tell everyone that, friends, just now let's finish the task, let's finish the meeting, then we'll have some fun, we'll talk over a cup of coffee, then we'll chit chat, then we'll gossip, whatever you want to do we'll do, but not at the expense of the meeting or the task. And friends, chit chat, gossip, small talk is of no use. So if you can cut that out, leave that for some informal gathering like a party or something, not during office hours, not in office, especially when you are discussing something important. So don't let all this get into your meetings or into your work day.
दोस्तों, कई बार जब हम बहुत फेमिलियर होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो मीटिंग के बीच में ही कोई और टॉपिक निकल सकता है और हम उस दिशा में जा सकते हैं, बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा। तो हमें ऐसे में सबको वापस लाना चाहिए, कहना चाहिए कि हम दोस्त हैं, बाद में मिलते हैं यार, फिर बातें करते हैं। और कोशिश करें ऑफिस में सोशल चिट चैट, गॉसिप ये सब ना करें, काम से काम, और काम के समय उसको तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उस पर कभी समझौता ना करें, उस समय काम होना चाहिए। तो दोस्तों, शायद आपको ये जो मैंने बातें बताई इनसे फ़ायदा हुआ होगा। अगली बार और भी बातें लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आई होप यू enjoyed this lesson and you would benefit from the things that I've told you about meetings. I'll get you more such things in the next video. Thank you very much for watching this one. I'll see you in the next. Till then, all the best.